Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज हमें indefinite integration रो थर्ड वीडियो नहीं किया या पूर्व indefinite integration रो 1 2 differentiation and differentiation माने वही derivative and probability matrices और determinants एतिकी चैप्टर अपलोड हेई सरछि तुमते आगु आगु गोटे गोटे चैप्टर अपलोड करिया आपण जदि मो चैनल रे न्यू अछंती तो मो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दियो बेल आइकन को प्रेस कर दियो एंड Telegram group को join करंतु to download all these videos. Right? So start करिया प्रथम लो. First question is integration of sin x divided by cos raised to 11x. देखो cos raised to 11x बड़ा पावर अछि cos रो और डिनोमिनेटर अछि तार डेरिवेटिव न्यूमरेटर अछि. So put cos x equal to t. Cos x को t करिवे. Cos रो डेरिवेटिव होछि minus sin x into dx equal to dt. न्यूमरेटर अछि सिर्फ sin x into dx. minus dt substitute कर दो sin x dx is minus dt divided by t का पावर 11 minus integration of t power 11 numerator को निकले t power minus 11 now this is equal to minus of t raised to minus 11 plus 1 divided by minus 11 plus 1 plus तो ये होचे minus 10 अगर माइनस तो माइनस ऑफ माइनस है प्लस 10 तो 1 upon 10 into t raised to minus 10 plus c. So this is equal to 1 by 10 into 1 by t raised to 10. और t होता cos x cos raised to 10x plus c. एटा होता एकदम बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन 2008 रास्ते एग्जाम रे. वन मोर क्वेश्चन dx divided by 2x minus x square. देखो तो ऊपर तो 1 अछि dx माने ऊपर कोन अछि 1 अछि 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक अछि तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनातो x स्क्वायर को कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन अछि नेगेटिव को साइन को बाहर को दे दो दिस इज x स्क्वायर minus 2x परफेक्ट स्क्वायर करिया पय 1 ऐड करंतु 1 सब्ट्रैक्ट करंतु to make it a perfect square add 1 and subtract 1 now this is integration of 1 divided by square root of minus of x minus 1 the whole square minus 1 ka square this into dx. So this is equal to integration of 1 divided by 1 square minus x minus 1 the whole square. So this is a square minus x square. 1 upon a square minus x square and that is equal to sine inverse of x by a. X is equal to x minus 1 divided by 1 plus c. So this also can be written as sine inverse of only x minus 1. Agla 1 mark question. 2008 again came in 2008. One more question. Find the antiderivative. Antiderivative means integration. Antiderivative and primitive both means integration. Integration of e raised to x into tan x plus log of sec x. So look, this is your integral. I is equal to integration of e raised to x into tan x plus log of sec x. Right into dx. देखो गोटे फॉर्मूला थिला ना व्हाट द फॉर्मूला इज e raised to x into f of x plus f dash x जदि बाहर e raised to x रहयो आ ब्रैकेट भीतर तमर फंक्शन प्लस तार डेरिवेटिव यार फॉर्मूला कोन होची यार फॉर्मूला होची e raised to x into f of x the function plus c. This is the formula. ए फॉर्मूला को यूज करियो चेष्टा करियो तो प्रथम फंक्शन होची प्रथम जो होची tan x tan x जो f of x कहबे तार डेरिवेटिव sec square x ये तो नाही नाउ आ गोटे अल्टरनेट बचला एंड द अल्टरनेट इज log of sec x को f of x कहबे log of sec x is equal to f of x डिफरेंशिएट करबा f dash x equal to log of sec x रो 1 upon sec x और sec x रो डेरिवेटिव होची sec x into tan x sec x और sec x कैंसिल हो गला तो f dash x मिल गला tan x. Therefore, I is equal to integration e raised to x into f dash x plus f of x into dx. तो फॉर्मूला होची e raised to x into f of x. ना 80 f of x कौन 80 f of x होची log of sec x. Log of sec x plus c. So this is the third problem. चलो the next fourth को जिबा. Fourth question.
if f dash x is equal to e raised to x plus 1 by 1 plus x square and f of 0 is equal to 1. This is one more information is given. F of x is given and f of 0 is also given. Find f of x. No. What is given? F dash x. What f dash x is? D by dx of f of x. D by dx of f of x is nothing but f dash x. F of x जो गोटे फंक्शन तार डेरिवेटिव होचे f dash x, राइट. अभी आपन f of x दरकार कौन करिवे? ये d by dx को हटावा पड़े. d by dx को हटावा पड़े दो बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दे. इंटीग्रेट कर ले इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव कहउचे और डेरिवेटिव कैंसिल हेला तो कौन मिलियो? f of x is equal to f dash x into dx. So remember, whenever f dash x is given, whenever f dash x is given, and from there if you want to find the value of f of x, then integrate both sides. Since f dash x is equal to e raised to x plus 1 divided by 1 plus x square. This is f dash x. Now integrating both sides. So integration of f dash x into dx is equal to integration of e raised to x plus 1 by 1 plus x square. Right? So f dash x integration होचे f of x equal to e raised to x integration e raised to x plus 1 by 1 plus x integration होचे tan inverse of x plus constant. So this is f of x. Now give zero value आने पड़ियो. Zero value आने पे एक गोटे condition आप लोग देखिए. What is the condition is? F of 0 is equal to 1. So f of 0 is equal to e raised to 0 plus tan inverse of 0 plus c, and this is equal to 1. So therefore e raised to 0 is also 1, tan inverse 0 is 0, plus c equal to 1. This 1 and this 1 will get cancelled, therefore you get c is equal to 0. So what will be f of x? Therefore f of x is equal to e raised to x plus tan inverse x. अब जो c थिला c रो वैल्यू कोन हेगला? 0 हेगला. No need to write now. So this is the value of f of x. This is your answer. 4 mark question आस्थिला 2016. It's a question of 4 marks. केते इजी क्वेश्चन देखो. खाली एति मन रखा गुडियो. जदी f dash x गिवन अछि सेतो f of x ऑब्टेन करियार अछि कोन करिवे? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे. जेडा जा साइड इंटीग्रेट कला पर गोटे कांस्टेंट आसी कांस्टेंट रो वैल्यू फाइंड करियार अछि. आ कांस्टेंट रो वैल्यू फाइंड करिया पे कोन करे? इनिशियल कंडीशन को यूज करिवे. व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन गिवन? f of 0 equal to 1. फंक्शन रे x को 0 कले फंक्शन रो वैल्यू होछि 1. सेटा यूज कले पड़े आसी. c मिल गेला, c को रिसब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज वन मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ए जो टाइप ता अछि ए टाइप ता बहुत बार रिपीट होछि. गोटे थर आस्थिला किंतु ये क्वेश्चन आउ टिके चेंज करे ना 3 वर्ष आछि. कंसेक्यूटिव 3 इयर्स रे आछि. कोन टाइप होछि? टाइप होछि गोटे लीनियर फंक्शन और रूट भितर गोटे क्वाड्रेटिक. डिनोमिनेटर रे प्रथम फंक्शन होछि लीनियर, द्वितीय फंक्शन होछि रूट भितर क्वाड्रेटिक. एमती टाइप रो क्वेश्चन रे जो लीनियर फंक्शन अछि रूट बाहर से लीनियर फंक्शन को कहिवे 1 by t. टाइप को टाइप रो इंटीग्रल एटा 1 डिवाइड बाय लीनियर इनटू स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. एमती जदी अछि पुट लीनियर इक्वल टू 1 upon t. पुट लीनियर इक्वल टू 1. दिस इज द इंफॉर्मेशन. ये टाइप मन अछि क्वेश्चन हे गेला, राइट. आमी खाली सिंपलीफिकेशन बाकी अछि. जो लीनियर फंक्शन अछि ताको 1 by t करबे. 1 रो डेरिवेटिव 0, x रो डेरिवेटिव 1 into dx is equal to 1 by t ro derivative minus 1 by t square into dt. So from there x is equal to 1 by t minus 1. Substitute कर दियो. Therefore I is equal to, I मतलब the integral, dx is minus 1 by t square divided by 1 plus x. 1 plus x. 1 plus x is equal to 1 by t minus 1. X is 1 by t minus 1. This is 1 plus x. X is equal to 1 by t minus 1, 1 plus x into 1 minus x square, and x is 1 by t minus 1. 1 by t minus 1 the whole square and square root. So this one gets cancelled. So this is I is equal to integration of minus 1 by t square divided by denominator हेगला 1 by t and square root भितरे 1 minus ER square, which is 1 by t square minus 2 by t plus 1 into dt. ये
+1 आउ ये -1 ये दुटा कैंसिल हो गला so this is equal to गोटे t 80 कैंसिल हो गला तो न्यूमरेटर इज -1/t डिवाइड बाय माइनस को भितर नहीं जिवे माइनस को जतले भितर नहीं जिवे और माइनस को बाहर रखंतु 1/t² एलसीएम को t² करिवे 1 - 2t डिवाइड बाय t² यार होचे स्क्वायर रूट इनटू dt इंटीग्रेशन माइनस साइन टा थिला स्क्वायर रूट भितरे राइट माइनस साइन टा थिला स्क्वायर रूट भितरे 8 थिला करेक्ट ना हां सो ऊपर हे गला एटा t² रो रूट हे गला t आ ये t भी कैंसिल हे गला ऊपर हे गला नेगेटिव ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t तो माइनस भितर मल्टीप्लाई हे गला 2t - 1 आ यार स्क्वायर रूट माइनस साइन टा स्क्वायर रूट भितर थिला राइट सो 1 - 2t आ 80 गोटे माइनस साइन टी थिला इनटू -1 ठीक है now this is equal to minus of integration of 2t - 1 raised to 1/2 होबो ऊपर ऊपर की -1/2 now this is equal to minus of here it is 2t - 1 raised to -1/2 plus 1 divide by -1/2 plus 1 अब t रो कोएफिशिएंट -2 अछि t रो कोएफिशिएंट 2 अछि डिवाइड बाय 2 कर दे so this is -1/2 into here it is 2t - 1 raised to 1 - 1/2 will be 1/2 and denominator is also 1/2 plus c now this 1/2 this 1/2 gets cancelled minus of 2t - 1 2 into what is t 1 by t is equal to 1 by 1 plus x 2 into t is 1 by 1 plus x minus 1 raised to 1/2 plus एटा होछ आपन फाइनल आंसर 6 मार्क रो क्वेश्चन आथिले कोन करली जो लीनियर फंक्शन थिला जदि एमती थियो 1 डिवाइड बाय न्यूमरेटर 1 आउ डिनोमिनेटर गोटे लीनियर फंक्शन आउ क्वाड्रेटिक फंक्शन थियो स्क्वायर रूट भीतर क्वाड्रेटिक माने डिग्री 2 लीनियर माने डिग्री 1 तो जो लीनियर फंक्शन अछि ताकू 1/t सब्स्टिट्यूट कर देबे देन पूरा फंक्शन को t फॉर्म रे कर देबे तापर स्क्वायर रूट ताकू एलिमिनेट करके इंटीग्रेट करबे राइट बुझियला आ देखो या पूर्व मु डिटरमिनेंट मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएशन नाउ दिस इज इंटीग्रेशन अपलोड करछ राइट तो जदी देखि नथि मो चैनल रे नुआ थिबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक और शेयर बटन को प्रेस कर दियंतु आ डिटरमिन बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आ जेति की अछि सब पीडीएफ को डाउनलोड करिया पे मोर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करंतु एंड व्हाइल जॉइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप बी केयरफुल देयर आर 3 ग्रुप्स इन टेलीग्राम देखि कि ओडिशा बोर्ड टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिवे ताकि ओडिशा बोर्ड जेते अपडेट अछि आपन मिल पाए राइट पढु तांतु एग्जाम रो फॉलो करंतु गुड लक।